Hello everyone, very good morning. How are you guys today? I hope you're doing very good and I hope you can hear and see me clearly as well. If all's good. Hi Vishal, good to see you back. Or I hope everything is clearly audible and visible. If yes, let's commence with our session today on psychology plus थोड़ा सा philosophy. Okay, actually majorly philosophy है ये, थोड़ा सा ना नाम में change होना चाहिए था. A woman who saw birds as individuals, lesser of psychology, more of philosophy. बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी आर्टिकल क्या है और फिलोसफी क्या है उसके अंदर. बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस है, लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी टू लर्न. आज मैंने ना एक चेंज किया है इन द क्लास. सो व्हाट वी विल डू इज कि मैं आपको वोकैबुलरी पहले दिखाऊंगी, सो दैट व्हेन वी लुक एट द पैसेज आप खुद से उस वोकैबुलरी के वर्ड की मीनिंग को समझ पाओ. ओके, ताकि आपके लिए वो आर्टिकल समझना और इजी हो. तो पहले मैं आपको वोकैबुलरी दिखा के समझा दूंगी एंड क्लास के एंड में मैं फिर से आपको वो वोकैबुलरी दे दूंगी, प्लस आई विल शेयर दैट वोकैबुलरी विथ यू इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. फॉर ऑल दोज हु डू नॉट आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो यू कैन गेट इनटू इट. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्या करेंगे हम क्या करते हैं हमारे एडिटोरियल ड्रिल्स में, मैं बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स लेके आती हूँ अलग अलग सोर्सेज से. सोर्सेज जैसे यहाँ दिए हुए हैं आपको, वन सेकेंड माई पेन. सोर्सेज जैसे आपको यहाँ दिए हुए हैं, बॉल पॉइंट पेन, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, एयन, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, एएल डेली और बहुत सारे और ऐसे वेबसाइट्स जहां से कैट आर्टिकल्स उठाते आया है. और हम भी उन्हीं में से आर्टिकल्स लेंगे, अलग अलग जॉनरेज डिस्कस करेंगे. हमने जैसे सोशियोलॉजी किया, साइकोलॉजी किया, आज फिलोसफी करेंगे, इकोनॉमिक्स पे भी हमने एक आर्टिकल किया था. ठीक है, ताकि हम अलग अलग जॉनरेज से कंफर्टेबल हो जाए एग्जाम में, क्योंकि अगर किसी भी ऐसे जॉनरे पे आर्टिकल आ गया जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना. तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जॉनरे से आर्टिकल्स लेंगे, उनके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे कि क्या लैंग्वेज यूज करते हैं वो इन जॉनरेज में. अलग अलग रीडिंग टेक्निक सीखेंगे. पैसेज के एंड में मैं आपको वोकैबुलरी दूंगी, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी फ्रॉम द पैसेज एंड मैं आपको फ्लो, थॉट फ्लो बताऊंगी आर्टिकल का क्या है. थॉट फ्लो में किसी को प्रॉब्लम है, थॉट फ्लो क्या होता है, एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ. थॉट फ्लो होता है किस तरीके से पैसेज में आइडियाज ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक पैराग्राफ क्या पर्पस, क्या रोल प्ले कर रहा है उस पैसेज में. सो उसको अगर हम बुलेट पॉइंट्स में लिख देंगे, अगर 8 पैराग्राफ्स है तो आज 8 पैराग्राफ्स है तो मैं 8 बुलेट पॉइंट्स लेके आई हूँ. ठीक है, सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स के बुलेट पॉइंट्स, अगर उनको आप कंबाइन करोगे आप मेन आइडिया लेके आ जाओगे. और सारे आंसर्स, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स पैसेज के आप उन्हीं बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, थॉट फ्लो के थ्रू आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल विच इज गोइंग टू बी ऑन philosophy and a bit of psychology, the woman who saw birds as individuals. But उसके पहले कुछ चीजें. One, we're launching our courses at flat 15,999. That's approximately 60% discount on our fee structure. Make the most of it right now. Use my code ALPA10. Please use the name spelling correctly, not alpha, not ulfa, but that's ALPA alpha 10. Use that code and subscribe right now to avail the 60% discount. Go ahead, brush up, and it's the best time as well because मेरा batch already launch हो चुका है with Ravi sir and Lokesh sir. My first class in the batch happens today at 5 p.m. So ensure that you come and watch the class live. बहुत interesting होने वाला है. We'll talk a lot and we'll ensure कि learning आपकी top notch हो. तो जल्दी से batches में भी आओ. Plus, we are launching something very interesting. It's a conclave of visionary leaders. CEOs from across the world are going to come on our platform and speak to us, and we'll have very interesting sessions for you only and only on Unacademy's CAT platform, CAT Summit 2025. Save the date, July 13th, 11 a.m. onwards. That's going to be happening on our app. तो मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं. ठीक है, I shall see you in the conclave on July 13th.
दिस इज द स्कैनर, जिसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। आज की वोकैबुलरी, आज के क्वेश्चंस, आज का आर्टिकल भी मैं शेयर करूंगी और आज की वोकैबुलरी पे मैं क्वेश्चंस भी आपको बना के दूंगी इन माय टेलीग्राम चैनल। सो बी अ पार्ट ऑफ इट, स्कैन करो और जल्दी से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी आपके क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बैच रिलेटेड, नॉन बैच रिलेटेड, कैट रिलेटेड, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड देयर। So I'm going to see you there as well. फर्स्ट स्लाइड, ओके। तो ये स्लाइड है वोकैबुलरी की। पहले आज के आर्टिकल की वोकैबुलरी करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छे से, और फिर हम आर्टिकल करेंगे, ओके। एक एक करके मैं आपको वर्ड्स समझा देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट होता है कंटिन्यूअसली किसी चीज में एफर्ट डालना, या उसको लगातार किसी टाइम पीरियड के लिए करते रहना, ओके। यूजुअली ये लॉन्ग टाइम पीरियड पे लास्ट करता है, उसे हम परसिस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू सॉल्व पैसेजेस फॉर कैट परसिस्टेंटली। लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सारे पैसेजेस करते रहना चाहिए आपको, सो दैट आप पैसेज सॉल्विंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। वर्ड नंबर 2, मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स होते हैं डाउट्स, जो आप अनश्योर हो किसी चीज के बारे में। एप्रीहेंशन ऑल्सो इज अ सिनोनिम टू डाउट। सो फीलिंग्स ऑफ डाउट और एप्रीहेंशन अबाउट द आउटकम और कॉन्सिक्वेंस। पीपल माइट हैव मिसगिविंग्स अबाउट देयर कैट रिजल्ट, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मिसगिविंग्स आप इजीली वेव ऑफ कर सकते हो, है ना। तो मिसगिविंग्स होता है कोई डाउट्स आपके मन में है, कोई आपके मन में एप्रीहेंशन है, आप अनसर्टेन है किसी चीज के बारे में। दीज आर मिसगिविंग्स। नेक्स्ट वन इज केप्टिव कंडीशंस। केप्टिव क्या होता है? केप्टिव मतलब होता है बंदी बना के रखना, कन्फाइन करके रख देना। सो अब जैसे अगर किसी पर्सन को मैंने प्रिजन में डाल दिया, द पर्सन इज हेल्ड केप्टिव, confined or imprisoned environment, especially for animals, बट ये ह्यूमंस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सो केप्टिव इज किसी को कन्फाइन करके रख देना, बंदी बना के रख देना, जेल में लॉक कर देना, रूम में लॉक कर देना, केज में लॉक कर देना, अगर हम एनिमल्स की हम बात करेंगे, ओके। एनिमल्स, सम एनिमल्स आर केप्ट केप्टिव इन जूज, है ना, तो वो हो गया केप्टिव कंडीशंस। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट यूजुअली हम एनिमल्स के साथ यूज करते हैं जब हम किसी भी एनिमल जो कि खुला घूमने वाला एनिमल है उसे हम घर में लाके रखने लग जाते हैं, हम उसे डोमेस्टिकेट करते हैं। मान लो मैंने घर में एक शेर पाल लिया, तो वो शेर डोमेस्टिकेटेड हो गया अब, है ना। तो किसी भी एनिमल जो कि यूजुअली थोड़ा वाइल्ड होता है, अगर उसको आपने कंट्रोल करके और घर में बांध के रख दिया या घर में रख लिया, दैट इज डोमेस्टिकेट दैट एनिमल, ओके। द नेक्स्ट वन इज एवियन। एवियन स्काई से रिलेटेड होता है। एविएशन उसी से आया, ठीक है। एवियरी उसी से आया। एवियन is a word that relates to birds because of course birds fly in the sky. So avian is anything that relates to birds. क्योंकि हम birds पे आर्टिकल करेंगे तो avian word तो आना ही था, ठीक है। Distress, एक troublesome situation. इफ यू फील यू आर इन डिस्ट्रेस, आप इमोशनली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं। इफ यू फिजिकली हर्ट, यू मे बी डिस्ट्रेस्ड। इफ यू आर इमोशनली वीक है, आप एंग्शियस है, आप ट्रबल्ड है, आप तो भी अपने आप को डिस्ट्रेस में बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस सिचुएशन एक ट्रबल्ड सिचुएशन, इट कैन बी समथिंग फुल ऑफ extreme anxiety, sorrow or pain, can be physical or mental as well. That is distress. कोई डाउट अभी तक के वर्ड्स में? हाय जैक, गुड मॉर्निंग। हम क्या कर रहे हैं, एवरीवन हु जस्ट जॉइंड मी, हम क्या कर रहे हैं, हम ये वर्ड्स आज पहले ही डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल से, ताकि आर्टिकल समझने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और क्लास के एंड में मैं फिर से आपके साथ ये वोकैबुलरी इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट एक नेचुरल बिहेवियर होता है जो बाय डिफॉल्ट आता है। यूजुअली हम इनको एनिमल्स से रिलेट करते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ इंस्टिंक्ट कैसे होता है, आप पैसेज के रेफरेंस में भी इसको समझोगे। एक फिश को स्विम करना सिखाना नहीं पड़ता, इट्स एन इंस्टिंक्ट दैट द फिश हैज, ठीक है। कुछ एनिमल्स होल्स डिग करते हैं, ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। कुछ एनिमल्स क्लाइम करते हैं, ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। एनिमल्स बिहेविंग इन अ सर्टेन वे बिकॉज दे आर ऑट टू डू इट अक्रॉस देयर लाइव्स, ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। बहुत सारे एनिमल्स की बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग इंस्टिंक्ट्स होती है और उनको वो सिखाना नहीं पड़ता, दे बाय डिफॉल्ट डू इट, है ना। गिल्स से ब्रीथ करना है फॉर एग्जाम्पल, ये उनका इंस्टिंक्ट है।
इंस्टिंक्ट आया सबको समझ में, अगर हम एनिमल्स से रिलेट करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट वन इज इथोलॉजी। एक स्टडी, देखो लॉजी क्या होता है, स्टडी होता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो लॉजी जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब अलग अलग चीजों की स्टडी होती है। ये तो यहां एनिमल्स के लिए है, इथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। देन इज एनेक्डोटल। देखो एनेक्डोट यूजुअली एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी की तरह आप मान सकते हो, बट फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द पैसेज इट इज एन अकाउंट, एक शॉर्ट पैराग्राफ जैसा, या अपना आपने डिस्क्रिप्शन दिया है डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वेशंस रादर देन साइंटिफिक एनालिसिस। मतलब एक एनेक्डोट ऐसी चीज होती है जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, हाँ बट आपने फील करी है और आपने देखी है आसपास, बट उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप जब बहुत ट्रबल्ड फील करते हो, इज देयर अ स्पेसिफिक थिंग और गॉड दैट यू प्रे टू? जब आप ट्रबल्ड फील करते हो तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन, पर्सन नहीं, गॉड ये सुप्रीम पावर है जिनको आप प्रे करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन यू बिलोंग टू। जैसे आप मुझसे पूछोगे, अगर मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं तो आई थिंक ऑफ हनुमान जी दैट वे। ओके, दैट्स हाउ आई हैव बीन रेज्ड, दैट्स हाउ आई वाज टॉट, एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज अ प्रैक्टिस, कि मैं बहुत ट्रबल्ड होती थी, आई वुड थिंक ऑफ हनुमान जी, दैट ओके गिव मी दैट पावर दैट यू हैव राइट नाउ। ओके, तो इस चीज को मैं साइंटिफिकली शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊं कि कैसे थिंकिंग ऑफ हनुमान जी गिव्स मी स्ट्रेंथ, इट पैसिफाइज मी, और मेरी जो एंजाइटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत बड़ा कोई सेमिनार लेना है, आई माइट नॉट बी वरीड, बट थोड़ा जिटरी मैं फील कर सकती हूँ। तो द मोमेंट आई थिंक ऑफ हनुमान जी आई गेट ऑल माई स्ट्रेंथ, कि ठीक है, बट इसको मैं ना साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दिस इज एन एग्जाम्पल। See, Ayan, that's what a lot of us have been taught as children, है ना, बचपन से ही सिखा दिया था, and that's what I pass on to my child as well. तो इसको हम प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिकली, बट ये ऑब्जर्वेशन देखा है हमने। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनेक्डोट, जो आपने आसपास देखी है, चीजें आप ऑब्जर्व करते हो जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय पीपल, दिस इज एनेक्डोट। एनेक्डोट हम बार बार आज पैसेज में वर्ड लेके आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली इज दिख रहा है बट शायद ट्रूथ ना हो। ऑस्टेंसिबल इज partly visible but may not be, it may be an illusion, it may not actually be true, like the presence of the almighty, the presence of supreme power, the presence of god, है ना। सबके मन में है, सब को लगता है कि हाँ भगवान है या अल्लाह है या क्राइस्ट है, जो भी आप बिलीव करते हैं, बट आपने मैंने देखा तो नहीं है, so it is ostensibly true but may not be actually true, it may not be reality, but we believe in, and it is apparent to us that there is some supreme power. Okay, so that is ostensibly. फिर आता है replicated. replicate करना मतलब उसी के एक दूसरी कॉपी बनाना, similar. ओके, रिपीट करना, डुप्लीकेट करना इज replicated. एक ही जैसी दूसरी कॉपी बना देना इज replicate. तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। It cannot be proven, yeah. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ, 2 स्लाइड्स में है ये वर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बायोग्राफिकल विनियट, इसको विग्नेट नहीं बोलते, विनियट। ओके, तो कौन मुझसे पूछ रहा था, मेरे से विशाल पूछ रहा था, तो मैं देखो आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रही हूँ। ओके, दैट्स विनियट। What is biographical vignette? Vignette is usually a description. Description. Biographical vignette क्या होता है? It's the description of a person. Bio is life. So a short description
of a person's life, person's character is biographical vignette. तो अगर मैं आज शेक्सपियर को डिस्क्राइब करने के लिए एक आर्टिकल लिख देती हूँ, it will be his biographical vignette. Just remember, vignette independently means description. Okay? All right. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, did you hit the like button? अभी करो, अभी करो. Okay, thank you if you've done that. And if you're watching it recorded, ensure that you comment under my video with a little thank you note. फिर आता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ब्रेक करते हैं वर्ड को. ओके, सब क्लीन करते हैं एक बार. ड्राइंग, इरेज ऑल. एंथ्रो मीन्स ह्यूमन और मैनकाइंड. ह्यूमन और मैनकाइंड. मॉर्फ इज शेप और चेंज. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या होता है? जब हम एक ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन चीज को एट्रीब्यूट कर देते हैं. दैट्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. हम एक ह्यूमन जैसा शेप एक नॉन ह्यूमन को, या ह्यूमन जैसी क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन को दे देते हैं. ठीक है, चेंज करके एक नॉन ह्यूमन को दे देते हैं. दैट्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. Attributing human traits or emotions to animals or non-human entities. ठीक है, that's anthropomorphism. Personification भी एक इसका figure of speech है जो हम यूज करते हैं. ठीक है. Anthropodenial, ये opposites हैं एक दूसरे के. ध्यान से समझो. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या था? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया नॉन ह्यूमन थिंग को. यहां हमने ह्यूमन से बिल्कुल दूर कर दिया. हमने ये बोला कि ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी नॉन ह्यूमन, चाहे एनिमल हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स को, उनको नहीं मिल सकती. ह्यूमन ट्रेट्स एनिमल्स में या नॉन ह्यूमन थिंग्स में नहीं आ सकते. इज एंथ्रोपोडिनाइल. सो दीज आर ऑपोजिट्स. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का उल्टा हो गया एंथ्रोपोडिनाइल. आए दोनों वर्ड समझ में सबको? ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आएंगे पैसेज में. एजेंसी, इंडिपेंडेंटली आप एक ह्यूमन की तरह इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हो. नॉट नेसेसरीली ह्यूमन लाइक, बट एक एंटिटी इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, उसे हम एजेंसी बोलते हैं. ओके, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक फ्री चॉइसेस. देन इज मेन स्ट्रीम. जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मूवीज जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है और मैक्सिमम लोग उसी तरीके के हैं, इज मेन स्ट्रीम. मैक्सिमम लोग इसी तरीके की मूवीज देखते हैं, मेन स्ट्रीम मूवी. मेन स्ट्रीम मीडिया, मैक्सिमम लोग इसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया. सो समथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड और प्रेवलेंट इन सोसाइटी और ए डिसिप्लिन. ओके, दैट्स मेन स्ट्रीम. अगर किसी साइंस में आप मेन स्ट्रीम की बात करते हो तो सब लोग उसी तरीके से सोचते हैं, वो मेन स्ट्रीम आइडिया हो गया. देन म्यूचुअल ट्रस्ट. मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे. ओके, कॉन्फिडेंस शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज और बीइंग्स इज म्यूचुअल ट्रस्ट. एकदम परफेक्ट एग्जांपल है म्यूचुअल ट्रस्ट का. आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगी. आप अच्छी अच्छी चीजें बोलोगे मेरे बारे में, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी. इट्स अ वाइस वर्सा थिंग. आपका भी विन विन और मेरा भी विन विन. इट्स म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग्स अस. देन वी हैव कल्चरल प्रैक्टिसेस. कल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिसेस जो एक स्पेसिफिक कल्चर को बिलोंग करती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, और ये कल्चर जरूरी वर्ड नहीं है. कल्चर मतलब एक एनी सेट ऑफ पीपल. जैसे हमारे घर में एक कल्चर है, तो ये मतलब नहीं है कि मैं राजस्थानी कल्चर को फॉलो कर रही हूँ या असमीज कल्चर को फॉलो कर रही हूँ. घर में कल्चर हो सकता है कि जब हम खाना खाएंगे, ऑल ऑफ अस विल बी ऑन द डिनर टेबल और हम कोई फोन या टीवी नहीं देखेंगे, ऑल ऑफ अस विल टॉक. सो दैट इज अ कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ माई हाउस होल्ड. तो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक चीज रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, ओके, एज अ ट्रेडिशन आप उसको आगे बढ़ाते जाते हैं अपनी फैमिली में, इट्स अ कल्चरल प्रैक्टिस. इट गोज ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यू पास ऑन दैट थिंग. थैंक यू जैक, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी. तो now you've cracked the code. But I'll be happy when you say, ma'am, you're the best teacher. That's the kind of compliment I look forward to.
Nobody teaches like you. We understand what you teach. That's the compliment I look forward to. Emotional bond, emotional strong connection feel करना easy है. Short lived, बहुत ही कम time के लिए. This happiness was short lived. मतलब मेरी happiness बहुत ही कम time के लिए थी, फिर मेरा सौरा वापस आ गया. Okay, so existing for a short period of time is short lived. Unappreciated, जिसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, वैल्यू नहीं किया गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया, किसी फैक्ट को, किसी आइडिया को, इट वेंट अनअप्रिशिएटेड. एंड रैडिकल, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव. रैडिकल इज एक पाथ ब्रेकिंग, जो चलता आ रहा था वहां से एक पाथ ब्रेकिंग चीज आई. इट वॉज अ रैडिकल चेंज. उस इनोवेशन ने सब कुछ बदल दिया. जैसे इंटरनेट, इट वॉज अ रैडिकल इन्वेंशन. Everything changed after that, and there's no going back. AI could also be radical. Okay, it's path breaking, it's innovative, it's progressive, away from what tradition holds, is radical. अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आर्टिकल पे आते हैं. चलो, here we go. Read the page. हर पैराग्राफ के बाद पॉज करना. पॉज 1, दिस इज पॉज 2. ठीक है, अपने मन में ब्रीफ करना पैराग्राफ को, एंड देन सेंड मी इट डन इन द चैट बॉक्स. फिर मैं पैसेज समझाऊंगी. Yeah, wheel, Vishal, of course, it was path breaking. Done? Okay, let me explain the passage, but before that, कल evening 6 p.m. critical reasoning की classes start कर रहे हैं, okay, on YouTube. तो हाँ, see me live at 6. Basics of critical reasoning करेंगे, okay? Here we go. तो 1938 में एक पर्सन को मेंशन किया गया है, होवर्ड. होवर्ड के बारे में ये ना बस एक इंट्रोडक्शन है कि हाउ होवर्ड बॉट अ लैंड एंड बिल्ट अ हाउस, and she wanted to study birds. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. शी वांटेड टू स्टडी बर्ड्स. सो ये बेसिकली इंट्रो है अबाउट हु वाज हॉवर्ड. शी यूज्ड टू प्ले वायलिन इन लंदन, एंड मिड 40s में सिटी से दूर रहना था, बर्ड्स के बारे में भी स्टडी करना था. सो शी मूव्ड, और when she moved into bird cottage,
She named the house Bird Cottage. What a beautiful name in Ditchling. Okay, she did not yet know birds very well, but she named the house Bird Cottage. But tab tak na she did not have a lot of understanding about birds. She did. Now this is a very important line because of the word however. She did, however, have misgivings about how birds were being studied by scientists. She had doubts about how scientists used to study the birds. Why did she have doubts? These lines explain it. One, the birds that were studied by scientists, उनको केज में रखा जाता था, तो उनका बिहेवियर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. ठीक है, ये बर्ड्स कंफर्टेबल नहीं थे साइंटिस्ट्स के साथ, वो बर्ड्स डरते थे साइंटिस्ट से, तो भी उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स उनको उड़ने नहीं दिया जाता था, उनको पिंजरे में रखते थे, वो बर्ड्स डरती थी साइंटिस्ट से. बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो साइंटिस्ट की स्टडी होती थी ना, वो एज पर होवर्ड फ्लॉड थी. शी हैड हर डाउट्स अबाउट द स्टडी. Howard believed that all of these factors warped their behavior. Warped is twisted their behavior, the behavior of the birds, and our understanding of the birds also. Because the birds were not observed in their natural habitat. अगर बर्ड ओपनली ट्री पे है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कैसे खाना ढूंढ रही है, वो कैसे बिहेव कर रही है, वो कैसे अपना नेस्ट बना रही है, वो कैसे अपने एग्स को हैच कर रही है, इट्स अ नेचुरल हैबिटेट, उसका नेचुरल बिहेवियर आएगा वहां. बट अगर आप एक बर्ड को कैप्टिव रखोगे, वो डरेगी आपसे, आप उसको उड़ने नहीं दोगे, ऑफ कोर्स वो स्टडीज वॉर्प्ड होने वाली है. ओके, read both the paragraphs, pause here, and then think what these are about, and then send me a done. You might missed many names here of birds जो हमने सुने नहीं हैं. But do you think your understanding of the passage depends upon these names? Do you think आपका पैसेज आपको कम समझ में आएगा क्योंकि आपको ये वर्ड्स पढ़ने में नहीं आ रहे या इनके नाम आपको नहीं पता है? No. ये सब सिर्फ डेटा है. When we read a passage, we try to focus on the idea behind it. So ये बहुत सारे blue tits, green tits, robin, sparrows, blackbirds और फिर एक chickadees, ये सब नहीं भी पढ़ोगे ना तो चलेगा. इसको skip करो, आगे चलो. आइडिया क्या बताना चाहे, तो हम ये जो पॉज कर रहे हैं ना, ये पॉज हम इसलिए कर रहे हैं आफ्टर एवरी पैराग्राफ क्योंकि ये वर्ड्स हमारे लिए नहीं मैटर कर रहे हैं. इस पैराग्राफ में ऑथर ने क्या आइडिया दिया है और इस टॉपिक के बारे में, वर्ड्स के बारे में बोला क्या है, इज व्हाट विल फोकस ऑन. तो नेवर बी बॉदर्ड अबाउट सच फैक्चुअल डेटा. इन पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो हम वापस आके चेक कर सकते हैं, बट यूजुअली इतना फैक्चुअल आता भी नहीं है कैट में. तो अब साइंटिस्ट क्या करते थे, कैप्टिव में रखते थे बर्ड्स को,
जो कि उसको गलत लगता था हावर्ड को. So what did Howard do? She instead used another approach. She, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया, एक अपना हाउस एक्सपेरिमेंट का प्लेस बनाया, लेकिन she kept it open. एक भी बर्ड को कैप्टिव भी नहीं रखा, उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया. She would feed them, but the birds would come and go of the house. And variety of words. She did not capture them, she didn't domesticate them, she did not tame them, कि पंख काट दिया बुड़ी नहीं सकता है. Nothing of that sort. The birds would just come in, go out whenever they wish to. Now, this paragraph ends here. This paragraph is just telling the approach she used to study birds. This paragraph tells us the continuation of the story on how she observed something different here. ये इंस्टेंस सबको समझ में आ गया कि कैसे एक bird आई and tried to speak to Howard, looking into Howard's eyes, and then it probably tried to say something. The bird's partner was also outside, again trying to cry and say something. There, she noticed an obvious distress in the body language of the bird. If she could notice distress in the bird's body language, imagine how comfortable she would have been around birds and how much she must have observed birds. रीजन सबको पता है कि किसी कैट ने उसका नेस्ट निकाल दिया था और उसके एग्स निकाल दिए थे मेल बॉक्स में से, एंड शी पिक द एग्स बैक इनटू द बॉक्स एंड द नेस्टिंग मटेरियल बैक इनटू द बॉक्स. सो द बर्ड्स न्यू Howard will help them. The bird trusted Howard. So pause here. What is this paragraph about? This paragraph is telling us about the experience she had, where birds showcased emotions and reflects to situations around the bird. Again, read this, pause, read this, pause, and then send me a done. Send me a done when you're done. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में. Which line is the conclusion? That she discovered something a lot of people never observed. That was unique observations ever made. And she set an example that remains relevant even today. That when she observed the bird asking for help, she thought, wow, birds are like humans, which no other scientist had ever done. This is the most unique observation she got from the episode she witnessed. Okay,
At that time, scientists saw birds as creatures governed primarily by instinct. इंस्टिंक्ट क्या बताया था मैंने आपको? फिश है तो स्विम करेगी, बर्ड है तो फ्लाई करेगी, ये उसका इंस्टिंक्ट है। ठीक है, यहां इंस्टिंक्ट हम एक फिलोसॉफिकल फ्रेज के जैसे देख रहे हैं। सो एवरी एनिमल हैज एन इंस्टिंक्ट, उसको वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैव यू सीन डॉग्स स्विमिंग? है ना, ये बाय इंस्टिंक्ट आ जाता है, नोबडी हैज टॉट देम दिस। सो एनिमल्स को साइंटिस्ट प्राइमरीली इंस्टिंक्ट के थ्रू देखते थे कि हर एनिमल एक इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है और उसको कोई सिखाता नहीं है वो, और सिर्फ वो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे काम करते हैं। हर एनिमल इंस्टिंक्ट के बेसिस पे सर्वाइव करता है। The field of ethology, what was ethology? Study of animal behavior, was then in its infancy. बिल्कुल बिगिनिंग नेसेंट स्टेज पे था, एमेचर था ये फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जिसको हम इथोलॉजी बोलते हैं। तो इथोलॉजी का फील्ड बस शुरू हुआ ही था उस टाइम पे, with pioneering scientists including these bringing experimental rigor to what had been largely anecdotal field. मैंने आपको एनेक्डोट का क्या मीनिंग बताया था, अब ये बताओ मुझे। रीड द लाइन, मुझे एनेक्डोट का मतलब बताइए। Their experimental rigor was brought to what had been largely anecdotal field. मैंने आपको हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था ना, आपको वो विजिबल है बट आप ना साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते हो। तो अभी तक ये फील्ड एनेक्डोटल था, कोई रिसर्च तो प्रूव कर ही नहीं सकती है इस चीज को कि इस एनिमल ने ऐसे क्यों बिहेव किया था, है ना। However, they focused primarily on the role of instinct rather than on richer forms of intelligence. तो अभी तक साइंटिस्ट ये मानते थे, these popular scientists, okay, pioneering scientists, वो ये मानते थे कि एनिमल्स का बिहेवियर इंस्टिंक्ट के बेसिस पे होता है। It is never anything beyond that, nothing more intelligent. So they used to consider animals as non-intelligent, birds as non-intelligent, and they would only do what their instincts tell them to: find food, feed themselves, and fly. That is all. Ye mana till that time. Although Howard was critical of scientific methods, she had not objected to the understanding they produced. So she said, मुझे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कम पसंद है एज पर बर्ड्स, क्योंकि आप उनको केप्टिव रखते हो, आप उनको बांध के रखते हो, आप उनको उड़ने नहीं देते हो। बट आई विल स्टिल वैल्यू व्हाट यू टेल मी, आई विल नॉट डिस्कार्ड द साइंटिफिक डिस्कवरी अबाउट बर्ड्स। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट द सॉन्ग बर्ड्स हु लिव नियर बाय टू बी वेरी इंटेलिजेंट एट ऑल। वेरी इंटेलिजेंट मे बी बर्ड्स आर नॉट, बट ये जो इंस्टेंस हुआ था ना होवर्ड के साथ कि बर्ड आई, रोने लगी उसके सामने, sought for help, और जाके वो कंफर्म हो गया that she wanted help, that was an intelligent sign. It was showcasing that birds could be intelligent too. Next page. Read this paragraph, pause, read this paragraph, pause. Do that right now. Yes, that is strange. Correct, Vishal.
The incident with the blue titmice showed that birds do not act solely on instinct. We discussed it, which ostensibly would tell them to be wary of humans. देखो, अगर आप देखोगे आसपास, शायद ट्रू नहीं है, लेकिन विजिबल है आपको, ओके? कि अगर आप एक बर्ड के पास जाएंगे तो वो बर्ड उड़ जाएगी, है ना? आप पिजन के पास जाएंगे तो वो आगे आगे भागेगा. It's difficult to catch birds with your own bare hands. So ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट है एक बर्ड का कि ह्यूमन से दूर रहो, अगर थ्रेटनिंग हुआ तो उनके पास नहीं जाना है अगर आपको डर लग रहा है ह्यूमन से तो. बट it was visible that the birds could think flexibly. Depending upon the situation, they may go closer to humans because maybe they wanted help. What else except thought would have made her act thus? So it was proven with her observation that birds not solely act on instinct. They use their brains, they have thoughts, and without thought, a bird would not have acted the same way that happened as an observation with Howard. So this paragraph, pausing here, tells me that birds, as per Hoven, have thoughts as well. That interpretation would not pass scientific muster. है ना? इसके लिए एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना प्रॉपर ओवर मेनी बर्ड्स. तो ऑफ कोर्स उनको पता था that there was no Howard that there was no scientific proof to it. It is anecdotal. Again हम anecdote पे आते हैं. और anecdote को क्या साइंस में कंसिडर किया जाता है? What do you think? क्या anecdote को साइंटिफिक स्टडी में कोई वैल्यू दी जाती है? नहीं. लेकिन जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट anecdote is still important in expanding the realm of possibility. कि जैसे ही मैंने बोला ना ये anecdote है कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बर्ड्स में थॉट होते हैं. इस मैंने सिचुएशन से ये कंक्लूजन निकाला जब वो बर्ड मेरे पास आके रोई. ठीक है, क्या ये एनेक्डोट एक बेस बन सकता है फर्दर रिसर्च के लिए कि हाँ हमें इस फील्ड में रिसर्च करनी चाहिए? तो एनेक्डोट अपने आप में साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, बट इट कैन फॉर्म अ फाउंडेशन टू मेनी अदर साइंटिफिक रिसर्चेस. ओके, many other possibilities people can think of and research on them. It is raw material for further understanding, further experimenting. This raw material is anecdote. So can I conclude by the end of this passage, can I infer that author strongly believed in the importance of anecdotes? Did the author strongly believe in the legitimacy and the validity of anecdotes? क्या author strongly believe करती थी कि anecdotes भी important हैं in the field of studying birds? The answer is absolutely yes. ये हमने infer कर लिया है by the end of this passage. Paragraph. Again, one paragraph, pause, think what it is about. Send me a done. बहुत ही इजी पैराग्राफ है, इसको समराइज करो. That she started recording everything.
बर्ड्स के बिहेवियर, उनके विंग्स कैसे फ्लटर करते हैं, उनके सॉन्ग्स का क्या मीनिंग हो सकता है, वो कब कैसी कॉल्स देते हैं। ओके, आपको पता है अगर आपने किसी नेशनल पार्क में कभी कोई सफारी करी होगी, तो आपको ना ऐसे ये सुना होगा, हाँ कॉल आई है, मंकी की कॉल कॉल आई है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। आप किसी भी नेशनल पार्क में जीप सफारी कर रहे हैं और हम सब मिलके शेर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शेर दिख जाएगा, शेर दिख जाएगा, और शेर दिखे ना दिखे कॉल सबको जरूर सुनाई देती है। कॉल पता है क्या होता है, मंकीज का एक पैटर्न होता है जिससे वो एक साउंड निकालते हैं बाकी मंकीज को अलर्ट करने के लिए कि यहाँ पे टाइगर है, इससे दूर रहना। ठीक है, तो जैसे ही कोई कॉल सुनता है ना, तो ये पता लग जाता है कि हाँ उस एरिया में टाइगर है, जाके हम ढूंढ सकते हैं उसको। तो कॉल सबको सुनाई देती है, लेकिन ये कॉल एक स्पेसिफिक टाइप की कॉल होती है जो ये बताती है कि आसपास टाइगर है। उसी एग्जाम्पल को आप को रिलेट करो बर्ड के कॉल से। बर्ड की कॉल डिस्ट्रेस में भी हो सकती है, हैप्पीनेस में भी हो सकती है। सॉन्ग्स जो सिंग करते हैं वो अलग अलग इमोशन के थ्रू सिंग कर सकते हैं। So Howard started recording everything in detail. That's what the paragraph is about. So we'll not give this paragraph a lot of time. ये बहुत ही simple paragraph है, ठीक है? आगे चलते हैं. Read this, pause, read this, pause. Am I audible, visible, everyone? बीच में थोड़ा सा लैग हुआ था. ठीक है, ओके. लैग हुआ था बट अब ठीक हो गया. चलो पैराग्राफ समझते हैं. बर्ड्स एज इंडिविजुअल्स पहली बुक जो होवर्ड ने लिखी. सेकेंड बुक लिविंग विद द बर्ड्स. दोनों ही मॉडरेटली पॉपुलर हुई बट आज कोई उनको फॉलो नहीं करता, विच इज सैड. नाउ व्हाट आर द रीजंस द ऑथर हैज गिवन why people actually do not value her work? One, it was too personal, less scientific. Okay, the vocabulary was also non-scientific, so any scientific community will not value it. Lack of formal training. She had no formal training in the study of birds. Had she studied, zoology or something of that sort in her educational background, she might be valued even more. Plus, her gender sadly also played a role in people not valuing her. Okay, it was not appreciated as much. Perhaps her insights were simply too radical, too path breaking कि लोगों ने सोचा कि अरे यार ये तो यूजलेस है, कौन ध्यान देगा. ज्यादा रेडिकल चीजें जब हो जाती, जब इंटरनेट आता था ना, so everyone was scared of it. अरे नहीं नहीं, हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम फेसबुक अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे. It was too radical and that's why everything was discarded. But maybe in future her thoughts are accepted as we accepted Instagram and Facebook and WhatsApp and credit cards. If Howard's reliance on anecdotes opened her to criticism, क्योंकि देखो बात है सारी साइंटिफिक कम्युनिटी की. साइंटिफिक कम्युनिटी में अगर आप एनेक्डोट्स के बेसिस पे अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात. एवरीवन विल जस्ट से दैट ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस, इट कैन नॉट बी प्रूवन.
So anecdotes are never paid attention to in scientific community, though they demonstrated a larger point. Now this larger point is very, very important. Let's break this line into fragments and let's understand that. Okay. So अब भी लैक हो रहा है क्या जैक? अब नहीं हो रहा होगा लैक, देखो ठीक लग रहा है मुझे अब। हाँ ठीक है, बीच में एक हुआ था बीच में, बट नाउ इट्स फाइन। अब देखो, what was the larger point that was demonstrated through her anecdotes? A profoundly significant generalization emerges through the anecdotal method of reporting biographies. So it's a very detailed observation. ये vignettes को हम observation बोलते हैं ना. So she observed biographical and biographies around her. बायोग्राफी यहाँ एनिमल्स की है, तो एनिमल्स को ही ह्यूमन का फॉर्म दे रखा है एक तरीके से। सो वो एनिमल्स, वो बर्ड्स कैसे बिहेव करती थी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन बर्ड्स की, ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही डिटेल्ड था, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट on the behavior of birds. There exists tremendous diversity of behavior among birds, both consequence and expression of their individuality. So birds, इस ये लाइन बहुत अच्छे से समझो, consequence and expression of their individuality. A bird's individuality, ठीक है, ये bird है, ये इसकी beak है, ये इसके feather है, ठीक है, तो ये bird है. The bird's individuality, the bird sings in this way, the bird flies in this way. इसका भी रिजल्ट होता है कि बर्ड का क्या बिहेवियर होगा, और बर्ड किस तरीके से एक्सप्रेस करती है उसका भी रिजल्ट होगा कि आप कैसे एक बर्ड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. There exists tremendous diversity because of the bird's existence and birds' expression of their individuality. So there is a lot of variety and that needs to be studied. Pause. Pause. तो फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है कि आज हम वैल्यू करते हैं उनके इनसाइट को. दैट्स ऑल. नो डिफिकल्ट वर्ड, नो हिडन मीनिंग, दैट इज ऑल. वी विल नॉट फोकस ऑन दिस पैराग्राफ. इट जस्ट टेल्स अस टुडे views, Howard's views about birds' intelligence, personality, complexity are accepted. They're studied also. Even so, at a moment with the intelligence and emotions of animals have been studied scientifically, many scientists actually do not accept and attribute words like friendship, love, grief to animals. They say animals don't feel friendship, love, or grief. Howard readily accepted it, recognized it,
that animals do feel friendship, love, and grief. But a lot of scientists, even today, do not accept it. To do so, if they accept it, there is a huge risk of looking at animals as humans, anthropomorphism, or falsely attributing human characteristic to other animals, which animals may not have. So क्योंकि वो false attribution जा सकता है, some scientists are wary of giving friendship based or love based or grief based attributes to animals. So this is still there is reluctance by scientists. वो नहीं देना चाहते हैं. This one, I think this is our second last page. Yes, it is. Read this paragraph, pause, read this paragraph, pause. We are coming to the closure of the passage. तो अभी तक इसके पहले हमने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के डर की बात करी. The scientists are scared of anthropomorphism. They don't want to give a false human character to an animal. और इस वजह से वो ग्रीफ, फ्रेंडशिप, सॉरो ऐसे ना एट्रीब्यूशंस नहीं देते एनिमल्स को. लेकिन इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा एंथ्रोपोडिनाइल. या तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया एनिमल्स को, और अगर वो नहीं किया तो एंथ्रोपोडिनाइल हो जाएगा. हम एनिमल्स को ह्यूमंस की तरह देखेंगे ही नहीं. वी विल गिव नो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनिमल्स, व्हिच इज रॉन्ग. नो ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक. अगर या फिर वाइस वर्सा, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक टू आवरसेल्व्स. So we cannot reach a stage of anthropodenial. So we have to allow anthropomorphism. That's what this paragraph talks of. This is a paragraph जो थोड़ा सा sad note पे आया है, that she did not write her third book. Her life was difficult. She could not leave the house. There were birds dependent on her. थोड़ा सा sad note पे आ गया है ये, okay? But सबसे ज्यादा difficult aspect क्या था? It was loving them. Not everyone can do it. For most songbirds only live short lives. So the birds you would love the birds, but they would die soon. That was the most difficult. Not cleaning your house, not being able to leave your house, but living with them was the most difficult. This love, she observed, was mutual. She gave love, she received the love in return. In the last days of Howard's life, he often flew up to her. So ये bald head उसकी bird थी. Okay, last days of bald head's life, it flew to Howard. He pretended to come for a nut, but did not eat it. He simply wanted to sit on her lap for a while. What note is the story ending in? A remorseful, a little sorrowful note, but also keeping up the whole spirit of how animals actually do not work on instincts only. They also work on feelings visible through this bald head.
in her last days, his last days, coming to Howard and not eating a nut, just sitting on the lap because it was his last few days. तो थोड़ा sorrowful है, लेकिन the spirit is still alive कि animal सिर्फ instinct पे नहीं, feelings पे भी जीते हैं. That is the end of our story. अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा साइड होके कि इसका थॉट फ्लो कैसा है पैसेज का. ठीक है. Why did she move to that एरिया जहां उसने वो अपना घर बनाया था, जहां बर्ड्स आते थे. स्टोरी की सेटिंग बताई गई है शुरू में, पूरी कहानी चल रही है बिगिनिंग में, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में, राइट. फिर ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या हुआ जब वो बर्ड आई रोते हुए उसके सामने कि नेस्ट निकाल दिया है, मेरे एग्स निकाल दिए उस बिल्ली ने. सो दैट्स द ब्रेक थ्रू मोमेंट. Critique of scientific norms. She said all of these people who scientifically study birds are wrong. You keep them captive. You do not let them fly. These birds are scared of you. She criticized the scientific norms. Immersive observation of birds. So Howard gave detailed observation of what she saw and observed with birds living around her. Neglect by scientific community, either anthropomorphism or anthropo-denial. That is the neglect by scientific community. वो anecdotes को totally discard करते हैं कि anecdotes तो काम के ही नहीं है, scientifically proven होना चाहिए. Methodological and ethical reflection. You should keep this as raw material and foundation for further research. Bittersweet reality and love for animals. Bittersweet है क्योंकि उनके साथ रहना भी difficult, उनको छोड़ना भी difficult है. It's bittersweet. And scientific community इसको नहीं मानती है, ये भी bittersweet है. Modern recognition of her views. So ये ना थोड़ा सा actually last की जगह ना somewhere यहाँ आना चाहिए था. Modern recognition that some scientists are still now, they have started following what she observed. So not as the end, bittersweet reality end में आना चाहिए था. This should have come somewhere here. आया सबको पूरा फ्लो चार्ट समझ में कि पैसेज कैसे डिफाइंड है? That's the gist of the whole passage in the form of a thought flow. वोकैबुलरी मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पहले करा दिए थे इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एज वेल एज विथ द पैसेज. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अभी तक नहीं लिया तो. सेकंड पेज. क्वेश्चन नंबर 1. What is the main idea of the passage? चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे? 1 मिनट दीजिए मुझे तब तक. 8 जुलाई है ना आज. आप जब तक आंसर बताते हैं I'll open up something for you. आंसर बताइए. ओके Okay, main idea. B. Very good, Vishal. The correct answer. Let's check it. Gwendolyn Howard's musical background helped her develop. Musical background सिर्फ एक line था. वो reason नहीं था that she had a bond with birds. It was her liking. Wrong. Howard's anecdotal and personal approach of studying birds offered early insight into birds' intelligence. Only this anecdotal approach made it possible. Okay, which are now gaining scientific acceptance. Although कुछ scientists उसको discard करते हैं, but हाँ, अब मानने लगे हैं कुछ. Correct. Despite her strong opinions, Howard failed to prove the scientific validity of her observations, which is why her work was forgotten. Correct. देखो, factually ये correct है, but पूरा passage is negative. नेगेटिविटी के साथ नहीं लिखा हुआ कि सब उसको भूल गए हैं, कोई उसका काम फॉलो नहीं करता. Rather, there is a whole paragraph that says now it is gaining scientific acceptance. तो ये हम इसको partly गलत मानेंगे. The scientific community has consistently dismissed non-traditional research methods and continues to reject all animal. They don't reject all. They have started using this as their foundation. So, rejecting all animal
कॉग्निशन थ्योरीज दैट लैक डेटा, रॉन्ग है। कुछ कुछ को एक्सेप्ट किया जाने लगा है, एंड दस आर करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली इज गोइंग टू बी करेक्ट विशाल एंड जैक इज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अजम्पशन क्या है पैसेज में से, ठीक है बताओ। सी, ओके, वन सेकेंड। चलो मैं समझाती हूँ आपको। असाइनिंग इमोशनल, अजम्पशन क्या होगा, एक प्री रेक्विजिट ऑलरेडी हिडन होगा पैसेज में, प्री बिलीफ, ओके। असाइनिंग इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटीज टू ह्यूमन नॉन ह्यूमन स्पीशीज इज मेथोडोलॉजिकली फ्लॉड। क्या पैसेज, ये जो अजम्पशन होता है ना, ये हमेशा ऑथर की तरफ से होता है, याद रखना। assumption will always be from the author's perspective। क्या ऑथर ने ये माना है कि इमोशनल और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज इन नॉन ह्यूमन स्पीशीज इज फ्लॉड? क्या ऑथर ने ये माना है? कुछ साइंटिफिक कम्युनिटीज बोलती हैं कि ये गलत है, लेकिन ऑथर ने इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी नॉन ह्यूमंस को देने को सही माना है। इट इज नॉट फ्लॉड एज पर द ऑथर। सी इज रॉन्ग। थिंक अगेन, ठीक है। विशाल सेज ए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बेस्ड इंटरेक्शन, दैट इज द काइंड ऑफ हाउस शी लिव्ड इन। बहुत टाइम तक बर्ड्स आई, बर्ड्स ने उसको ट्रस्ट किया, बर्ड्स ने उसके साथ इंटरैक्ट किया, एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग थी। क्या ऐसी सेटिंग्स एनिमल्स के बिहेवियरल ट्रेट्स को आपके सामने लेके आ सकती हैं? यस। क्या ये सेटिंग इन्हीं एनिमल ट्रेट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं लैब्स में? यस, बिकॉज birds aren't allowed to fly, they don't get comfortable with scientists, so lab conditions में जो research होती है वो obscure होती है, और long term trust based naturalistic setting में जो research होती है वो animals के real behavior trait को uncover करने में help करती हैं। written in the passage indirectly, A is the correct answer, ठीक है। Howard's use of anecdotal evidence disqualified her work from having any influence। थोड़ा influence तो हुआ बाद में, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी influence नहीं हुआ, there was no influence, wrong। Domestic proximity to animals inherently leads to subjective interpretations, no, the author disagrees to it, he says domestic proximity actually leads to good interpretations, it will not be inherently subjective, sometimes the conclusions may be valid, sometimes invalid as well, so inherently word उसको बहुत extreme बनाता है, wrong। And last one is your homework, screenshot लो and मुझे आंसर बताना under my video in the comment section, okay। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे स्कैनर पे, जो कि मेरा QR कोड है फॉर माय टेलीग्राम चैनल, स्कैन करके आ जाना, ओके। एंड these are our results, you can go through them, and that is going to be all for today evening, my first class in our class batch, see me there tomorrow evening 6 p.m. we start our sessions for
critical reasoning, ensure that you attend them live as well. That is going to be all for today. Have a very, very, very good day, everybody. God bless you.